वेलकम टू ज़ीग्निशन। मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। आज के शो में बताते हैं क्या है खास, बहुत सारी एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के टेस्ट ड्राइव हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो फास्टन योर सीट बेल्ट एंड गेट सेट रेडी टू गो। देखते हैं क्या है हेडलाइंस। दिखाएंगे महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवीज में क्या है खास। ले चलेंगे आपको लंदन, जहां महिंद्रा ने अपना डिजाइन स्टूडियो किया लॉन्च। करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत और जानेंगे उनके आगे के प्लान्स। ले चलेंगे BYD की इलेक्ट्रिक MPV कार E6 की टेस्ट ड्राइव पर। हेलो एंड वेलकम टू ज़ीग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम यहां UK में हैं, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना ग्लोबल डिज़ाइन सेंटर इनॉग्रेट किया है। जी हाँ, इनॉग्रेशन के लिए महिंद्रा के ग्रुप चेयरमैन आनंद महिंद्रा यहाँ पर आए और उन्होंने MADE यानी महिंद्रा एडवांस डिज़ाइन यूरोप, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, इसका इनॉग्रेशन किया। आप जानते हैं इस डिज़ाइन सेंटर से अब फ्यूचर के इलेक्ट्रिक कार्स कॉन्सेप्ट्स, रियल हाई एंड टेक्नोलॉजी and design concepts will be done and used here. So it's very, very important and close to Mahindra's future high-tech, business. And what's interesting is that ये जगह Mahindra Racing के campus में ही है. So there's going to be a very close integration between both teams. So this is the future of Mahindra and Mahindra and the electric car story जो Mahindra की तरफ से हम आगे देखेंगे। 5 big ग्लोबल SUVs जो कंपनी ने आज अनवील की है, इनफैक्ट उनको दिखाया है लॉन्च टाइमलाइन के साथ। ऑफ कोर्स इट इज़ सम टाइम अवे, 2 साल के करीब आपको रुकना पड़ेगा बिफोर दीज कार्स एक्चुअली हिट द रोड, बट वी डू गेट अ सेंस कि ये गाड़ियाँ फ्यूचर में कैसी दिखेंगी। बहुत ही एक्साइटिंग लाइनअप है, राइट फ्रॉम 2024 एंड ऑल द वे अप टू 26। सो 2 साल में 5 ऑल इलेक्ट्रिक ग्लोबल SUVs 2 ब्रांड्स के अंडर, जिसके बारे में महिंद्रा ने आज बताया। वन इज़ द XUV ब्रांड एंड द अदर इज़ बॉर्न इलेक्ट्रिक। उसके अंडर 3 गाड़ियाँ हैं, XUV के अंडर 2 गाड़ियाँ हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एक्साइटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा। खास बात यह है कि ये वोक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप में महिंद्रा ने एक प्रोजेक्ट लिया है, वहाँ जहाँ पर इंग्लो प्लेटफॉर्म जो कंपनी ने लॉन्च किया है, वेयर दे आर टेकिंग इनपुट्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम वोक्सवैगन एंड दिस इज़ द पार्टनरशिप दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। और उसके बाद एक्सप्लोर भी कर रहे हैं आगे फ्यूचर में किस तरह से ये पार्टनरशिप बियॉन्ड जस्ट कंपोनेंट्स, सेल बैटरीज या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक जा सकती है विद वोक्सवैगन। सो लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स फ्रॉम महिंद्रा इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। स्टे ट्यून्ड। बिग मोमेंट फॉर महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी हाँ, कंपनी ने अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs से पर्दा उठा दिया है। फाइनली दीज हैव बीन अनवील्ड एंड ऑफ कोर्स ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम दे विल बी लॉन्च्ड इन इंडिया। आपको मैं बता दूँ 2 बिग SUV ब्रांड्स, इलेक्ट्रिक SUV ब्रांड्स कंपनी ने इसके साथ लॉन्च किए हैं। वन इज़ ऑफ कोर्स द XUV एंड द अदर इज़ BE, Born Electric as they call it. 5 SUVs का प्लान है टू स्टार्ट विद। दीज आर इलेक्ट्रिक, कम्प्लीटली ऑल इलेक्ट्रिक SUVs जो कंपनी लॉन्च करने जा रही है। इनफैक्ट कंपनी का कहना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय 2027 25 से 30% उनकी फ्लीट इलेक्ट्रिक कार्स से होगी। सो बेसिकली द फोकस henceforth फ्रॉम द कंपनी इज़ दैट वो शिफ्ट करेंगे ऑल इलेक्ट्रिक की तरफ। द कार नेक्स्ट टू मी राइट नाउ, एज यू कैन सी, दिस इज़ the XUV E9. There is enough potential and excitement around this. Of course, ये one of the first few हैं जो भारतीय बाजार में लॉन्च होंगी। And then of course there's BE 05, 07, 09 that's slated for launch at a later point. Design language, as you can see, it's very futuristic. This of course is a bit in its concept form. इस जो मेन फाइनल वर्जन इसका आएगा वो थोड़ा सा बदल के आ सकता है, बट यू कैन सी इट्स वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक लुकिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स डिज़ाइन लैंग्वेज एंड ऑफ कोर्स फीचर्स, कनेक्टिविटी, द रेंज, ऑल ऑफ दैट कंपनी इज़ लुकिंग एट वेरी क्लोजली। व्हाट्स एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस कार इज़ कि वोक्सवैगन के साथ इस पर ये इंग्लो प्लेटफॉर्म, दिस इज़ व्हाट दे हैव डेवलप्ड, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म on which all the 5 SUVs, electric SUVs are based on. And ये platform basically Volkswagen के साथ उनके components के साथ यहाँ पर बन रहा है and it is really truly global in the way it will perform and will be launched. So
Volkswagen के साथ जो partnership है, that can go beyond this is what we understand, and that's going to be pretty exciting for the company क्योंकि फ़िलहाल कुछ components हैं जो Volkswagen से वो ले रहे हैं और they are already exploring a partnership on whether they can go beyond this, whether they can actually make cell batteries together. दूसरी बात charging infrastructure में क्या दोनों big automotive giants participate कर सकते हैं साथ में. So a big consolidation also happening in the Indian automotive space, but these are the cars of the future from Mahindra and Mahindra. The XUV range इस पर 2 गाड़ियाँ हैं and the BE range जिसमें 3 electric vehicles will be launched right from 2024 end all the way up to 2026. Well, the future is here from Mahindra and Mahindra. Well, we are talking about the 5 big, bold SUVs जो Mahindra ने unveil किए हैं. Of course, the launch timeline is some time away, but this is the big statement that they're making today on what the future entails for Mahindra in the electric vehicle space. मेरे साथ इस वक्त company के MD and CEO from Mahindra Group, Mr. Anish Shah है, who will talk about the cars that we can see here and of course the future plans and the roadmap in the electric space. Anish, lovely to have you. Thank you so much. And I think from the looks of it, जैसा आप देख रहे हैं और लोगों ने भी आपको बताया होगा, I think they look very promising. सबसे पहले तो this is the statement you're making by unveiling the first 5. Tell us what's gone in making them. Swati, first pleasure to be here with you, and I will start with the InGlow platform because that is really a world-class high-tech platform that provides for greater safety, greater comfort in the cars. It provides for the ability to have the best-in-class batteries put in the car as well with a higher range and adaptability across multiple models. Okay. So this is really a path breaker. And then you see 5 new SUVs come up. These are not concept cars. These are cars that we are actually going to be launching in the market. So this is a real car. Like this is not concept. This is how it is likely to be when it gets launched. This is how it will be when it is launched, and that's unusual in a sense for an auto company to talk about 5 new launches at the same time. Clearly, आप काम बहुत पहले से कर रहे थे इस पर. There has been a lot of work, and as I've said before, we are in the first 5 innings of a test match in electric. And this is something that's going to really change the game. Okay, when you say that this is going to change the game, I want to know because ऐसा नहीं है कि electric cars India में, I mean globally नहीं है. I mean there are some in the luxury space, in the mid space, and it's a constant evolutionary process we are seeing. ये गाड़ी उनके मुकाबले कितनी different है? When you have partnered with Volkswagen, I'm sure there's a lot of blending of technology that you're very confident about, as I can see. What is its USP? How does it stand out from the crowd? So think of what we've done with the XUV 700. We have created a car that is world class. True. It stands out against anyone else in the world. And the technology there is astounding. It has all been developed at the Mahindra Research Valley by our engineers. It is indigenous, completely. It is indigenous. Right? Now take that and think about it for electric. We want to have exactly the same impact with these electric vehicles as we had with the XUV 700. That's the benchmark. We feel good about it. That is a benchmark, right? And that's why we feel good about the fact that we can compete with the global majors and we can do very well in that space. Okay, so tell us the kind of investments that has gone in. अब ये आपने 5 cars की बात की है. The platform is absolutely new. इसमें the contribution of Volkswagen for now, and I think you are also expanding or looking at a possibility of expanding this cooperation to beyond just this. So the kind of investments that has gone in, when do you break even? If you can help us with some numbers, कितना volume you think you will be able to start selling? Of course, ये 2 साल बाद launch होंगे. So there is a roadmap, I'm sure. So what are those numbers? So the investments we have talked about already that we're putting in the electric space. British International Investment is coming in and co-investing with us. They will put in $250 million. We will put in $250 million as well. There has been some amount that's spent so far, and we'll bring in some more investors. So on balance, the investment here is not very significant as we look at it versus ICE. But that has made your valuation pretty high for the electric business. That has made the valuation high because BII, having looked at our plans in details, also feels that we will be a winner in this space. And as we're a winner in this space, that's what's going to attract. So for us, break-even is going to be actually much faster than what we've seen for many of our other vehicles. Okay. And what is that?
in terms of timing, each vehicle will have a different break-even. We haven't got the exact numbers as yet, as we will once the pricing and everything else is finalized. But it's one that actually is going to deliver more for us than our ICE cars have been so far, and that's quite a statement. Okay. What about the margins? And I think I'll come to ROE also. It's a very, very close topic, I know. And you've been consistently delivering on it, and I must compliment you for that. क्योंकि आपने बहुत पहले बोला था हमारा target है 18% ROE, and I think now you have been, I don't know how many quarters. 4 quarters in a row now. Yeah, so you are at 18%, and I think the chances are that perhaps you will overachieve that number. Is that right? And जो money है growth के लिए invest होना है. Yes, so money will be invested in growth only where it makes sense. Okay, very, very cautious. Otherwise, about we will that, give it back to investors. That is what we have promised. Sure. But we do have mega growth plans right now, and both in auto and tractor, our businesses are doing well. We are putting more capacity in our tractor business as well, as we are seeing greater potential there. We're looking at farm machinery in a much bigger way. So there are many different growth drivers. Renewables is another area also. So there are many different growth drivers that we have for the group right now, and our focus is really to grow and scale. Grow and scale, and that's what has been happening. Coming to just the automotive piece, and I think ये Inglo की बात आपने starting में की, and I think this is the premise of the whole success story that perhaps we'll see on the electric cars. Volkswagen के साथ जो cooperation है, the partnership, what is the extent that it can go from where it is today to beyond? I think there are lots of potential options there, and it's a great partnership. We've got great respect for the leaders at Volkswagen, and they're a large global player, and we feel that there's a lot that we can do together. So we will see where that goes. But for now, the focus is on motors and batteries, and really getting these 5 vehicles to the market. And as we do that, we will look at furthering the partnership. Yeah. How are the margins right now? Because the pressure of commodity was there, और अभी थोड़ा सा cool off हुआ है. So you think now you'll be good with maintaining your margins or maybe bettering them, because you've been also consistently passing on the price hikes? So we have talked about margins in auto going up by 300 basis points, and we are on track right now to achieve that. By the end of the year? Going forward, by the end of the year and going forward, as commodity prices comes down, maybe that can go up, maybe some of it will be passed back to the consumer. Oh, you can even go down on prices? If commodity prices go down to where they started, yes, that's something we would pass back to the consumer as well. So our approach is always to have a very compelling value proposition for the customer. An outstanding car, very high quality, and a very good price. True that. You talked about the group, and I think वो एक important बात इसलिए है क्योंकि your businesses are starting to really perform. For each of them, I think you've had very, very clear focused strategy. The jewels that you talk about always, if you, for the benefit of our viewers, if you can tell us, and unke plans in terms of when do we see them being listed? Yes. So we have 7 growth gems. The definition of our growth gem is that they reach $1 billion of market cap in the next 2 to 4 years. 3 of them are listed today, which is holidays, life spaces, and logistics, and they are well on that path right now. The other 4 are unlisted, and they will get to valuation as well as a potential IPO again in the same time frame, 2 to 4 years. Okay, 2 to 4 years में 4 more companies that will get listed. The cleanup has happened pretty much across, or there is still some room left? The cleanup has happened, but we will continue to maintain the financial discipline in terms of what we need to do and what we need to drive across businesses. So the monitoring will continue on a regular basis, and the focus is on ensuring profitability and ensuring that we are growing and scaling up our businesses. All right, Anish, lovely speaking with you. Thank you so much for your time. Same here. All right friends, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद अब कहीं मत जाइएगा क्योंकि ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे. डोंट गो एनीवेयर. BYD, well, ये है Build Your Dreams, जो कि वॉरेन बफेट बैक्ड कंपनी है, और इसकी ये E6 इलेक्ट्रिक व्हीकल भारतीय बाजार में नवंबर 2021 को लॉन्च हुई.
ऑफकोर्स हमने इसका एक लॉन्ग टेस्ट ड्राइव किया और अब हम आपको बताएंगे ये गाड़ी एक्चुअली चलाने में और परफॉर्मेंस वाइज कैसी है। अगर गाड़ी की बात करें तो इसके स्पेसिफिकेशंस आपको हम बता दें। एक फुल चार्ज पर, सिंस इट्स अ फुल इलेक्ट्रिक कार, तो 520 की रेंज आपको देती है, यानी 520 किलोमीटर्स आप इस गाड़ी को एक फुल चार्ज में चला सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम आइडियल सिचुएशन देखें तो 400 450 तो डेफिनेटली ये रीच कर सकती है इफ़ यू ड्राइव इट नाइसली एंड थोड़े से आप इसको अच्छे से विदाउट बीइंग टू अग्रेसिव ऑन द एक्सेलरेटर चलाएं तो आपको ये ठीक ठाक एक रेंज दे देती है। इसमें 71 किलोवाट आवर की बैटरी है जो ऑलमोस्ट यहाँ पर 94 हॉर्स पावर देती है, विच इज़ योर पावर आउटपुट, एंड 180 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, विच इज़ नॉट सो बैड। और टॉप स्पीड इस इलेक्ट्रिक कार में आप 130 तक ले जा सकते हैं। सो दैट्स द स्पेसिफिकेशन अबाउट दिस कार। BYD E6 की तरफ आप देखते हैं तो आपको ये एक फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट लगता है। BYD E6 का डिजाइन काफी फ्रेश नजर आता है और इसमें यूनिक नोज स्टाइल के साथ छोटे कटआउट इसकी सिग्नेचर ग्रिल पर देखे जा सकते हैं। देखने में आपको लगेगा कि ये एयर इंटेक्स के लिए बनाया गया है, हालांकि कंपनी ने इसे सिर्फ ग्रिल को एक नया डिजाइन देने के लिए बनाया है, जिसके तहत कंपनी ने इस ग्रिल को ड्रैगन फेस डिजाइन ग्रिल कहा है। इसके साथ ही आपको यहाँ स्वेप्ट बैक हेडलाइट के साथ LED DRLs भी देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपको ये इलेक्ट्रिक MPV काफी लंबी नजर आती है। इसकी लंबाई 4695 mm, चौड़ाई 1810 mm, ऊंचाई 1670 mm और इसका व्हील बेस 2800 mm की दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 170 mm का मिल जाता है। साथ ही इसी EV में आपको 17 इंच के व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें अलॉय व्हील्स का डिजाइन ठीक ठाक दिया गया है। इसका रेयर प्रोफाइल साधारण दिखता है, हालांकि इसमें LED टेल लाइट्स बेहतर दिए गए हैं। BYD E6 के इंटीरियर में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ आपको फ्लोटिंग डैशबोर्ड देखने को मिलता है। इस MPV के सेंटर में 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें किसी भी फिजिकल बटन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके AC के कंट्रोल्स भी इसी टच स्क्रीन में शामिल किए गए हैं। कुछ अन्य बटन्स का इस्तेमाल इसके सेंटर कंसोल पर ही दिया गया है, जहां ड्राइव मोड्स, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग और हजार्ड लाइट के कंट्रोल्स भी मौजूद हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो रही है तो ये काफी रिस्पॉन्सिव है। हालांकि कंपनी ने इसमें ना तो एप्पल कारप्ले और ना ही एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन दिया है। ये एंड्रॉयड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें ऑन बोर्ड वाईफाई दिया गया है, जिसमें इंटरनेट चलाकर आप ऐप स्टोर से गाना, यूट्यूब और गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टच स्क्रीन की खास बात यह है कि आप इसे 90 डिग्री घुमा भी सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड पर स्क्रीन में गूगल मैप्स और कई सारे ऐप्स स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरे फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसमें एक 5 इंच की कलर्ड MID डिस्प्ले, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, स्टीयरिंग माउंटेड मीडिया कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और CN95 ग्रेड वाला एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स दिए हैं। हालांकि इस MPV में 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स की कमी खलती है। फ्रंट की दोनों सीटें 6 वे मैनुअल एडजस्टमेंट और बेहतरीन कुशन के साथ आती हैं। हालांकि इसमें लंबे व्यक्ति को थाई सपोर्ट की थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कंपनी ने केबिन में हर जगह हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। हालांकि डैशबोर्ड पर दिया गया हाई ग्लास टेक्सचर्ड इंसर्ट्स काफी प्रीमियम नजर आता है। रियर सीटें काफी ज्यादा आरामदायक हैं और इसमें कुशनिंग भी बढ़िया तरीके से की गई है। इसमें आपको अच्छा खासा नी रूम और लेग रूम मिल जाता है। इसके साथ ही AC वेंट्स रियर पैसेंजर्स के लिए मिल जाते हैं, लेकिन AC टेम्परेचर और फैन स्पीड के कंट्रोल नहीं मिलते। साथ ही रियर सीटों पर आर्म रेस्ट की कमी भी महसूस होती है। बूट स्पेस की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक MPV में आपको 580 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। कंपनी के मुताबिक आप यहाँ 4 बड़े और 2 छोटे सूटकेस रख सकते हैं।
वेल अगर हम इसे सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में देखें तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, बिकॉज 520 की फुल चार्ज में एक रेंज रिस्पेक्टेबल है, रेंज एंग्जाइटी नहीं होगी इफ़ यू हैव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 50-60 में भी 100 किलोमीटर्स पर डे, नॉट सो बैड। आपको रोज़ चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है, कंफर्टेबली आप ड्राइव कर सकते हैं। एंड अगर हम इसकी आइडियल कंडीशंस की बात ना करें, 520 विच इट प्रॉमिस, चलिए 450 तक भी अगर ये दे एक फुल रेंज में, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि आपको अच्छी खासी रेंज यहाँ मिल जाती है विच पीपल वुड प्रिफर एंड लाइक। 30 lakhs में ये गाड़ी एक अच्छा प्रोपोजिशन है फॉर पीपल हु वांट टू गेट इनटू फुल इलेक्ट्रिक कार इन द हायर सेगमेंट। नई BYD E6 में कंपनी ने इन हाउस विकसित ब्लैड बैटरी टेक्नोलॉजी दी है, जो कि अब तक की सबसे सुरक्षित बैटरी मानी जा रही है। BYD को विश्वास है कि उनकी ब्लैड बैटरी कई तरह के सेफ्टी टेस्ट में पास हुई है और इसमें ओवर चार्जिंग और हीटिंग जैसी कोई समस्या नहीं देखी जाएगी। E6 इलेक्ट्रिक MPV में कंपनी ने 71.1 kWh का बैटरी पैक दिया है, जो कि एक सिंगल चार्ज पर 95 bhp की पावर और 180 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। शहर में चलाने के दौरान ये काफी तेज लगती है और ट्रैफिक में इसे चलाना काफी ज्यादा आसान है। इसका स्टीयरिंग भी हल्का है और धीमी गति पर आपको अच्छा रिस्पांस देता है। इसके साथ ही स्टीयरिंग में एक स्पोर्ट मोड भी है, जिसके चलते स्टीयरिंग तेज रफ्तार पर थोड़ा भारी हो जाता है। इसे हाईवे पर चलाना भी काफी आसान है। इसमें 100 km/h की रफ्तार पर आप इसे आसानी से चला सकते हैं। कंपनी ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीड लिमिटर भी दिया है, जिसके चलते टॉप स्पीड सिर्फ 130 km/h है। चार्जिंग की बात करें तो BYD E6 में 60 kW DC फास्ट चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते फुल चार्ज होने में इसे करीब 90 मिनट का समय लगता है और 40 kW AC वॉल माउंटेन फास्ट चार्जर के जरिए ये 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। 6.6 kW AC स्लो चार्जर के जरिए फुल चार्ज होने में इसे 12 घंटे का वक्त लगता है। इसमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसका GL ट्रिम सिर्फ DC फास्ट चार्जर के जरिए चार्ज होता है, जबकि GLX महंगा वेरिएंट AC फास्ट और स्लो चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। इस डिफरेंस के अलावा इसके दोनों ही वेरिएंट्स फीचर्स के मामले में सेम है। ये BYD की तरफ से पहला प्रोडक्ट है जो भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है एट 29 और 30 और लाख रुपीज़। खास बात क्या है, हाल ही में इस इलेक्ट्रिक व्हीकल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन EV। जी हाँ, 2203 किलोमीटर्स इस गाड़ी ने कवर किए बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, जहाँ उन्होंने कवर की ऑलमोस्ट 9 सिटीज़ और 4 स्टेट्स, और इसलिए इस गाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_kjn, यहाँ पर आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेज सकते हैं और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें भी एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। 2 व्हीलर पर हेलमेट पहनना बिल्कुल मत भूलिए, और जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। जान है तो जहान है। जय हिंद।